While being guarded all time by the loyalists of the official faction BJP Pravari Vinod Sonkar this morning met a group of veteran leaders of the state BJP over breakfast in the state guest house and assured them that their viewpoints and stand on the organizational situation in the party functioning of the government will be taken care of and acted upon by the central leadership. Talking to the media, Sonkar said, प्रभारी के नाते मैं पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया हूं और प्रभारी के नाते मैं बार बार यहां पर आता रहूंगा और इस प्रवास का उद्देश्य संगठन पे चर्चा करना, संगठन को विस्तार करना, संगठन को मजबूत करना और आगे आने वाले एडीसी और जो नगर निकाय के चुनाव हैं उन चुनाव पे चर्चा की गई। देखिए, संगठन पूरी तरह से मजबूत है और संगठन बूथ तक तैयार है। हम एडीसी के चुनाव को लेके पूरी गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं और सरकार जब भी एडीसी के चुनाव को घोषित करेगी हम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और उसमें जीतेंगे भी, पूर्ण विश्वास है। और संगठन को उसी को लेके जो चीज़ें तैयारी करना है वो तैयारी की जा रही है। He said, I have heard from many quarters and all the points will be considered. Sonkar added that being BJP state Pravari, he will again and again visit the state and matter of discussion listed from upcoming ADC elections to municipal election and organizational issues. On being asked about the criticism and open infights between the party, Sonkar said, the organization is extremely strong and ready for the booth while working on upcoming ADC election whose dates will be soon declared. On the other, Deputy Chief Minister Jishnu Debarman signalled that the ADC election will be held soon and in this regard talks with the Election Commission is going on. কয়েক মাস পরেই তো হবে এডিসি ইলেকশন। সুতরাং এডিসি ইলেকশনের রণকৌশল তৈরি করা, কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং ইলেকশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ইলেকশন। আমরা প্রায় ত্রিপুরাতে বলি এডিসি ইলেকশন হলো সেমিফাইনাল, তাই আমরা এডিসিতে খুব ভালো একটা সিট নিয়ে আসতে চাই এবং এডিসি ত্রিপুরা রাজ্যের এডিসি অন্যরকম, 2/3 স্টেট এডিসির আওতায় পড়ে এবং আপনারা সকলেই জানেন যে এই রাজ্য মন্ত্রিসভা থেকে আমরা সুপারিশ করেছি কেন্দ্র সরকারকে যে এডিসির ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য, এডিসির নাম পাল্টানোর জন্য, এডিসির সিট বৃদ্ধি করার জন্য। সুতরাং এডিসির জন্য আমরা অলরেডি অনেক কাজ করে ফেলেছি। While setting aside the questions of media persons on BJP's infighting and seat sharing with LAIPFT, Jishnu Debarma claimed that a lot of work have been done by the government for ADC areas. However, before Vinod Sonkar's arrival, it was expected that the dissident MLAs and leaders of the party as well as veteran and now discarded leaders including former state presidents will meet him. But there was no time slot kept for him to meet the dissidents. Bureau Report, Halabol.